Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be covering you experiment number 13 for your electric circuit analysis 1 lab, and its title is Analysis of Parallel RLC Circuit. Now this time this lecture is going to be a bit different than your previous scenarios that you have been following. So in this case I will suggest that you will be doing this experiment on your own. I will be just giving you some basic guidelines that you might be requiring for this experiment, but however I will not tell you that what you need to do and how you are going to implement it. So let's see that I have provided some basic details about this experiment in these slides, and I will provide you these slides as well. You will be requiring similar apparatus that you have been using in the previous implementations, and I have given some basic details of what is a parallel RLC circuit and what it will be required to implement this. Now there are a few important things that you need to understand while implementing a parallel RLC circuit. That you have a function generator here, right, and a function generator is connected to a parallel RLC circuit, right, like this, and the values that you will be requiring are 1 kilo ohm, 1 millihenry and 1 microfarad, and the function generator will be connected to the ground, and the positive terminal will be connected to the positive terminal of all of these, or the positive nodes of all of these junctions, right? Now what's important is that this time you will have to find out that what will be the relationship between the inputs and the outputs. Now as you know that in the previous scenario when I was telling you about the series RLC circuit, in that case what happened was there was some phase differences involved in the case of the inductive and the capacitive components. Resistive components does not pose any kind of changes, but however the inductive and the capacitive components do pose some changes. But however in the case of parallel RLC there are some differences. This difference is in the form of waveforms of current. Now this is up to you that how you are going to find out that what will be the relationship between the input current waveform and the output current waveform, right? So you will be requiring an oscope, and this oscope will tell you that what will be the relationship between the input voltage waveform, this is the input voltage waveform, right, and the output voltage waveforms, and output voltage waveforms across VR and VL. Apparently since you can see that all of these components are connected directly parallel to each other, this means that the voltage drop across VR should be and ideally equal to VL and VC. So this means that ideally there should not be too much of phase differences between the input and the output voltage waveforms. But however, since the current is going to be divided in all of these branches, IR, IL and IC, so this means that there must be some kind of differences between all of these current waveforms, and there, since both the inductive and the capacitive waveforms do affect the phase differences as well, so this means that there must be some phase differences between the input current and both of these currents, IL and IC as well.
एम्पलीट्यूड्स में तो ऑब्वियसली फ़र्क होगा ही, बट हाउएवर फेज डिफरेंसेस में भी फ़र्क होगा, बट ओनली अमंग दीज टू कंपोनेंट्स. But now here is the question. The question is that how will you observe the current waveforms on O-scope? Previously I already told you that this is not possible that हम O-scope के ऊपर हम current waveforms observe कर सकें. Because O-scope is particularly designed to observe the voltage waveforms. But however, अगर हम करंट वेवफॉर्म्स को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं किसी भी ऑसिलोस्कोप के ऊपर, सो दिस मीन्स दैट आपको कुछ एडिशनल सर्किटरी रिक्वायर्ड होगी टू मेक दिस हैपन. Now there are two important things that you need to understand before trying to implement it. That first, आपको एक theoretical concept होना चाहिए about the input voltage and input current and the overall impedance. जो ओवरऑल इम्पीडेंस है उसके दरमियान और इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. सिमिलरली वी इन और जो आपके पास ओवरऑल करंट है एट द रेजोनेंट, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी बिहेवियर इस सर्किट का देखना है. प्रीवियसली जो आपने प्रैक्टिस फॉलो की फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सीरीज़ RLC सर्किट, उसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे इसके अंदर भी. आपको इस सर्किट का बिहेवियर एट फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी आपको देखनी है, या इसको हम इक्वल टू एफ भी हम देखेंगे, राइट. या तो आपने इन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को सेट करके आपने इस सर्किट का बिहेवियर देखना है. तो उस बिहेवियर के अंदर आपको ये ऑब्ज़र्व करना है दैट हाउ इज़ द ओवरऑल करंट बीइंग अफेक्टेड. करंट आप हर कंपोनेंट के अंदर एमीटर लगाकर भी देख सकते हैं या हर कंपोनेंट को अलग से भी आप देख सकते हैं. ये बिहेवियर किस तरह से होगा ये आपने ऑब्ज़र्व करना है. इसका कंप्लीट एनालिसिस आपने प्रेजेंट करना है इन योर लैब रिपोर्ट. सिमिलरली अब आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ विच इज़ आपने ओ स्कोप के ऊपर एक एडिशनल सर्किटरी ऐड करनी है टू ऑब्ज़र्व द करंट वेव फॉर्म्स एंड उनका फेज डिफरेंस भी आप ऑब्वियसली देख सकेंगे. सो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ RL सर्किट लिया है and I have connected an oscilloscope here. Now what do I need to do is that I will go to simulate, and then I will go to the instruments and look for a component called the current clamp, and I'm going to select this and drop it at a point जिस point पर मुझे current waveform देखनी है. मैं input पर current waveform देखने जा रही हूँ, so I place it here. Similarly, I am going to place another current clamp and place it at another component या at another node जहाँ पर मैं current waveform दूसरी देखना चाह रही हूँ. एक मैं input पर देखना चाह रही हूँ और एक मैं inductor के ऊपर देखना चाह रही हूँ, right. So let's see that अब मुझे इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. That I'm simply going to connect this to the ground. ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया. एंड नाउ ऑसिलोस्कोप के ऊपर मुझे अब जो ये करंट क्लैम्प्स की जो ऑपोजिट एंड है इसको कनेक्ट करना है. मैंने चैनल A के ऊपर फर्स्ट करंट क्लैम्प को कनेक्ट कर दिया और सेकंड करंट क्लैम्प को मैं चैनल B पर कनेक्ट कर देती हूँ, राइट. एंड आफ्टर दैट मैं इन दोनों को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देती हूँ बिकॉज द सर्किट इज़ गोइंग टू हैव अ कॉमन ग्राउंड पॉइंट, राइट. तो अब मैं इनका सेगमेंट कलर चेंज करके
so that I can observe that both waveforms में क्या difference है. Let's try to simulate it. Input के ऊपर frequency हम थोड़ी सी high set कर देते हैं. Let's set it to 100 Hertz and let's simulate it. Right, तो मेरे पास अब करंट वेवफॉर्म जो है ये मुझे बता रहा है आउटपुट की. राइट, इसको अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ इनपुट का, सिंस रेड वेवफॉर्म इतनी छोटी आ रही थी कि इट वाज नॉट बीइंग डिस्प्लेड, तो मैंने इसका स्केल थोड़ा चेंज किया. नाउ इट इज़ बीइंग विजिबल टू मी एंड सिंस मैंने इनपुट फ्रीक्वेंसी बहुत लो सेट की हुई है, दैट्स वाई फेज डिफरेंस कुछ ज़्यादा मुझे विजिबल शो नहीं कर रहा. बट हाउएवर इफ़ आई ट्राई टू प्ले विद द इनपुट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज आई नो दैट इंडक्टेंस या ओवरऑल जो इम्पिडेंस है इंडक्टर की, that is dependent upon frequency. So this means that this is showing me the current waveforms. So आप यही एक additional circuitry है जिसके थ्रू हम current waveforms को oscilloscope के ऊपर observe कर सकते हैं. So this was the main thing that I wanted to tell you. Rest of the things I leave it up to you, that how you're going to submit your report, and this will carry significant score. So I hope that you will try your best to implement this circuit. So this way I'm going to finish up this lab, and phase differences and circuit का behavior at different frequencies आपको ये observe करना है. And similarly end पर आपको जो ये measurements and calculations show करनी है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैनर में शो करनी है. ये है कैलकुलेशंस व्हेन योर फ्रीक्वेंसी इज सेट बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दीज आर द कैलकुलेशंस व्हिच यू आर गोइंग टू शो at the resonant frequency. Right, these are before at frequency less than resonant frequencies, and these will be the calculations that you will show at the resonant frequency. So इसके अंदर आपको जब भी आप table fill करेंगे, then you will have a clear picture that how your circuit is going to behave at the resonant frequency. Resonant frequency का formula same है जो कि आपका series उसमें था, series RLC circuit के अंदर. Right, so this is how you're going to implement it, and I hope that you will finish it up perfectly. So now I'm going to end the session. I hope and wish you all the best. Allah Hafiz.